Good morning, students. Today we will continue our chapter, that is movement of substances. Yesterday we have learned about the composition of blood. Today we will learn about the blood vessels. I have already told you there are three types of blood vessels. So, blood vessels are a complex system of tubes through which blood flows through our entire body. So, there are three types of blood vessels, namely arteries, veins, and capillaries. Now, what are arteries? Arteries carry oxygen rich blood from our heart to different parts, different organs of our body. हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सेप्ट ओनली वन आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. The blood flow is rapid and at very high pressure in the arteries. Therefore, arteries have thick elastic walls. जिन ट्यूब्स की जो वॉल्स होती हैं बाहर वाली, वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, थिक, बिकॉज इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर पे फ्लो करता है. नाउ व्हाट आर वेन्स? वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी टू द हार्ट. सारे बॉडी पार्ट्स से जब देखो, जब ब्लड वो यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स, तो द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड और द ब्लड हैव carbon dioxide in it. So veins collect the carbon dioxide rich blood from all parts of the body to the heart. They are thin walled and have valves. Valves क्या होती हैं कि it prevents the back flow of blood, क्योंकि इसमें deoxygenated blood होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, तो इसमें क्या होती हैं, वॉल्व्स होती हैं. वॉल्व्स मीन्स ढक्कन होते हैं कि ब्लड को पीछे नहीं फ्लो करने देता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं टूवर्ड्स द हार्ट. नेक्स्ट, व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. जो आर्टरीज और वेन्स के आगे आगे ब्रांचेज होती हैं, और इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स जो बिल्कुल पतली पतली थिन, एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं, दे आर नोन एज कैपिलरीज, which helps in the diffusion of gases and chemical substances. जो किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स. नाउ व्हाट इज हार्ट? I have already told you कि heart is four chambered muscular organ that pumps the blood to all parts of the body. It is made up of special muscles. Heart क्या एक muscular organ है. Muscles means which beats regularly, and it is made up of special muscles called cardiac muscles which never get tired. Tired means कभी नहीं थकती, हमेशा rhythmically क्या करती रहती हैं, बीट करता रहता है हार्ट. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच मसल्स? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक मसल्स. सो टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन carbon dioxide, the heart has four chambers. The four chambers of heart are the right auricle, the left auricle, the right ventricle, and the left ventricle. So in the heart there are four chambers. Which one? The right auricle, left auricle, right ventricle, and left ventricle. And both right and left auricles and ventricles are separated by a septum. Septum means एक पतली सी वॉल होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती है, सेपरेट. हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ हार्ट. So on the left hand side there is oxygen rich blood, and on the right hand side there is carbon dioxide rich blood which colors blue, which shows in blue color. So the right side of heart receives impure or carbon dioxide rich blood from the body and pumps it to the lungs for oxygenation. Right side से कहाँ जाता है ब्लड?
सारे बॉडी पार्ट्स में इकट्ठा होकर राइट साइड में आता है, वहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में उसको क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन. सो द ब्लड बिकम्स प्योर और ऑक्सीजन रिच. देन दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड comes to left side of the heart. The left side of the heart receives oxygenated blood from the lungs and supplies it to the whole body. So thus the partition between chambers helps to avoid mixing up blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. So now what is heartbeat? The heart contracts and relaxes rhythmically and continuously. This process is called heartbeat. Heartbeat continue every moment of our life. The heartbeat can be felt by placing your hand on the left side of your chest. अगर हम chest के left side पे अपना hand रखें, then you can feel the heartbeat. The normal heartbeat is about 72 times per minute under normal conditions. So the rate of heartbeat increases under the conditions of stress due to anxiety. जब कोई stress होता है या कोई anxiety है, कोई tension है, the heartbeat becomes high. Doctor use an instrument called stethoscope to measure the number of heartbeats. During heartbeat, two sounds can be heard, that is lub and dub. So stethoscope के साथ doctors can check the heartbeat and he can heard two types of sound, that is lub and dub sound. The beating of heart can be felt as throbbing sensation in the arteries. जैसे जैसे हार्ट बीट करता है तो ब्लड का फ्लो किस में होता है, आर्टरीज में, और हम आर्टरीज थ्रॉम्बिंग सेंसेशन को फील कर सकते हैं कैसे, इफ़ यू प्रेस द रिस्ट रीजन. अगर आपकी कलाई, आप कलाई को थोड़ा सा प्रेस करो, द जस्ट अबव द आर्टरी, द थ्रॉम्बिंग कैन बी फेल्ट. थ्रॉम्बिंग मीन्स आपको थोड़ी सी सेंसेशन फील होएगी. दिस थ्रॉम्बिंग इज कॉल्ड पल्स and it is due to the blood flowing in the arteries. The number of pulse per minute is called pulse rate, and pulse rate is same as the heart rate. A resting person usually has a pulse rate about 72 to 80 times per minute. So एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, 72 to 80 times. So pulse rate भी same है, कितना, 72 to 80 times. The rhythmic beating of different chambers of heart maintains circulation of blood and transportation of substance to different parts of the body. The chambers beat in a cyclic manner. The cycle is called cardiac cycle. एक बार contract होता है एक chamber, दूसरा क्या होता है, relax. So contraction of heart is called systole and relaxation of heart is called diastole. And this systole and diastole makes a cardiac cycle. But the lower animals like amoeba, hydra, sponges don't have circulatory system like human beings. Why? Because the water in which they live brings food and oxygen with it as it enters their body. जब बॉडी में वाटर एंटर करता है उनकी बॉडी के थ्रू, तो उसके साथ ही क्या चली जाती है, फूड एंड ऑक्सीजन. और जब वाटर बाहर निकलता है, व्हेन द वाटर मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडीज, इट कैरीज वेस्ट मटेरियल and carbon dioxide with it. So that's why lower animals don't have circulatory system. Now the diseases of circulatory system. We know that the pumping heart produces a pressure in our artery and this is called blood pressure, and the normal blood pressure is 120 by 80 mm of mercury. The blood pressure rises if the heart beat faster or if the arteries becomes narrow. अगर आर्टरीज नैरो हो जाए तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेज होगा, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई. द ब्लड प्रेशर में बी लो और हाई. द हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन एंड द लो ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपोटेंशन. Constant high or low blood pressure is harmful for the heart and it puts a strain on the heart and makes it work harder, which can cause हार्ट अटैक. जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कभी हाई हो गया कभी लो, उससे क्या होता है, ब्लड हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और हार्ट अटैक होने के क्या होते हैं चांसेस. हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में कॉज ड्यू टू excess of oil and butter in our diet, smoking and lack of exercise.
And hypotension may be caused due to excessive loss of blood from the body and failure of heart to pump blood properly. So these are the diseases related to circulatory system. Now how can we prevent from these heart diseases? We should drink adequate amount of water daily, eat green vegetables and fruits daily, take care of your diet. Excessive butter and oil in the diet must be avoided. Avoid smoking, do regular exercise to keep body fit, avoid stress, worry and tension, get regular medical checkup. So these precautions we have to take to prevent from heart diseases. I hope that you will understand the chapter. Thank you very much.